उसके नीचे एक स्क्रीन इमोशंस की होती है, और उस इमोशनल स्क्रीन में जब आप उसको व्यू करना चाहते हैं, वो तस्वीर वही नज़र आती है जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके जहन पे निछावर हो। मेरे भाई मेरी जान, गिलगित बल्तिस्तान इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंशाल्लाह इट विल रिमेन पार्ट ऑफ पाकिस्तान। दुनिया में जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स बनी है ना, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस के तहत प्रिंसिपैलिटीज़ की इनकॉर्पोरेशन हुई है। ये मुझे और आपको कोई जान बाबा या खान या जो भी नाम है, मैं किसी के नाम की तस्दीक नहीं करना चाहता, वो इस तरीके से बयान करते हैं जैसे इंग्लैंड कोई 5000 साल का तजर्बा है, जर्मनी 6000 साल का तजर्बा है, इटली 9000 साल का तजर्बा है। ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है। इटालियन यूनिफिकेशन ऑलमोस्ट 170 ईयर्स की एक्सपेरिमेंट। आपको हिस्ट्री में रोम मिलेगा, इटली नहीं मिलेगा। आपको हिस्ट्री में फ्लोरेंस मिलेगा, इटली नहीं मिल रहा। मिलान है, इटली नहीं है। इसी तरह जर्मन यूनिफिकेशन है, इस तरह यूके की यूनिफिकेशन है, इस तरह पाकिस्तान की है। जो इंडियन यूनियन है अंडर ब्रिटिश राज भी ना, ये एक दिन में ब्रिटिश राज नहीं बना था। ये कोई मोर और लेस 150-200 साल उनको लगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको इनकॉर्पोरेट करते गए। आप अपने इलाके की तारीख़ भी देखेंगे ना तो महाराजा उनसे गुजरों से लड़ाइयाँ लड़ते हुए और सिखों से लड़ाइयाँ लड़ते हुए और पूरे कश्मीर की, ये क्या थी? उस तरफ ज़ारस्ट रशिया था, इस तरफ ब्रिटिश एम्पायर थी, और वो इस स्ट्रेटेजिक एरिया को, उस तरफ सिंगसियांग का इलाका था, उस तरफ कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान जिसको वेस्ट तुर्किस्तान कहते थे, ये इलाका था। ये तमाम इलाके इस तरह तारीख़ी तौर पे एक दूसरे के साथ इख्तिलात करते रहे। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, आपको फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की भी इंटाइटलमेंट है। इतने बड़े मजमे में मुल्क के वज़ीर आज़म के सामने जो आपके दिल में है आपने कहा है, तो किसी ने स्टाइफल तो नहीं किया आपको। ये तो आपका आर्गूमेंट इधर ख़त्म हो जाता है। या तो ये हो खुदा न ख्वास्ता कि आपको डिस्करेज किया हो, मॉडरेटर ने आपको रोकने की कोशिश की, मैंने नहीं की। अच्छा, इसके बाद खुदा न ख्वास्ता आपको कोई नुकसान हो तब भी कोई नुक्ताचीनी बन सकती है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका ये इल्ज़ाम कि यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें वज़न कम हो जाता होगा, कम वज़न होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के तहत इस मुल्क की हमारी अपनी चेकर्ड हिस्ट्री है, उस पर अगर मैं चाहूँ तो घंटों बात हम कर सकते हैं। अगर जिस दौरान की तरफ आप मुझे इशारा दे रहे हैं, उस दौरानिया में यहाँ पे ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट थे, उनको गोलियाँ मारी गई, उनके साथ और ऐसे हरकत हुई जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़िम्मे में तो बिल्कुल नहीं आती। लेकिन हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकल और सोशल और जर्नलिस्टिक कल्चर है, नहीं होना चाहिए इस तरह, इसको डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन ये एक स्पेसिफिक दौर के साथ नहीं जुड़ा हुआ। मैं हुकूमत में आता हूँ तो मुझे इजहार राय जो है ना वो जहर लगता है। अगर आपको दे दूँ हुकूमत तो आपको जहर लगना शुरू हो जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हम उसको एज अ प्रिंसिपल नहीं ट्रीट करते हैं, हम उसको इवेंट बेस पिक करके चेरी पिकिंग के तहत ट्रीट करते हैं, और फिर एक उसके इर्द गिर्द नैरेटिव बना लेते हैं कि देखा जुल्म अजीम आजकल जो हो रहा है, और वो सारे मजलूम पहले कुछ सालों तक जालिम की कतार में चल रहे होते हैं। जो असल बात है वो गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस की है। वो बात आपकी दुरुस्त है कि गिलगित बल्तिस्तान, हम आप जानते हैं कि एक स्ट्रेटिजिकली इंगेजमेंट हमारी जो उस रीजन में है हिंदुस्तान के साथ हमारा और उनका हमारे साथ 3 जंगें हम लड़ चुके हैं ओवर द इशू ऑफ कश्मीर। कुछ लोगों का ये व्यू है कि जीबी या नॉर्दर्न एरियाज़ जो हमारा है वो रवायती तौर पे कश्मीर का हिस्सा है। एक व्यू ये है कि नहीं, उनकी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। ये आप डोमेस्टिक कंजम्पशन या पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए ऑन द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी रख सकते हैं, लेकिन जब आप यूएन के इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में किसी मैटर को रिजॉल्व करते हैं तो फिर उसी फ्रेमवर्क के तहत ही चीज़ों को देखना पड़ेगा। हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। लिहाजा
उसको एक एज अ होल रीजन ऑफ कश्मीर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। मीनवाइल ये सोल्यूशन पाकिस्तान में बार बार अटेम्प्ट हुई हैं और उसी को रैशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि बाय द टाइम वी हैव दैट सेटल्ड स्टेटस एक ऐसी इंटरिम अरेंजमेंट हो जिसमें उनको नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, सेनेट में रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, बाकी फोरम्स पे आ जाए, एनएफसी में भी उनका हिस्सा आ जाए। ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। इसको पीसफुल पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के अंदाज में चलानी चाहिए। दिट शुड बी अ सेनर वॉइस, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ मिलनी चाहिए, दूसरी की आवाज़ें आपके आवाज़ के साथ मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें एलिमेंट ऑफ रिजेंटमेंट जब आप डालते हैं ना तो आप अपने केस को कमज़ोर करते हैं। मुझे नहीं पता आप एक स्पेसिफिक इंसिडेंट का बात जिसका कर रहे हैं कि माँ को गोलियां लगी हैं, बहुत ट्रेजिक है अगर ऐसा हुआ है। आपको पता है ना कि मतलब हमारे इस मुल्क में 90,000 इस तरह माएँ बहनें बाप बेटे गोलियां बम खा के गए हैं, कोई एक नहीं है। अगर इस एक माँ की बुनियाद पे आप पूरे के पूरे रियासत के तस्वुर को अगर के हवाले से कह रहा हूँ, हो सकता है आप ना कर रहे हैं, अगर उसको एक जालिमाना अंदाज में पेश किया जाए तो शायद वो इंसाफ के करीब ना हो। हमारे यहाँ वायलेंट सोसाइटी है, हमारी हाईली वेपनाइज्ड सोसाइटी है, हमारे यहाँ वायलेंस का रुझान मजहब के नाम पे, ज़बान के नाम पे, नस्ल के नाम पे वो अपनी पीक पे है। पहले ये सेटल करना होगा कि राइट टू वायलेंस किसके पास है। वायलेंस की मोनोपोली रियासत के पास रहेगी। हो सकता है रियासत उसकी एप्लीकेशन गलत करे, लेकिन रियासत में सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मौजूद है, एक मैकेनिज्म मौजूद है, एक प्रोसेस मौजूद है। जब आप उसको ट्रांसफर करके इक्वेट करके कोई भी गिरोह, वो बलूचिस्तान में कोई गिरोह हो सकता है, वो सिंध में हो सकता है, वो केपी में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, आप उसको शेयर होल्डिंग और इक्वल रिकग्निशन के तहत जब देखेंगे तो आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेशन स्टेट को डिफाई कर देंगे। जब हम प्रिंसिपल्स के साथ एग्री कर जाएंगे फिर उसकी एप्लीकेशन पे बात हो सकती है। आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है ना क्वालिफाइड लोगों को पेशेंट को हाथ लगाने देते हैं ना, मतलब मैं अगर कल को स्टेथोस्कोप गले में डाल लूँ और एक वाइट कोट पहन लूँ, that does not qualify me to treat that patient or do the surgical procedure. उसके लिए मुझे certain principles या procedures से खुद गुजरना पड़ेगा, तब I would be or she would be allowed ना। तो रियासत वो नर्सिंग केयर है जिसको सर्जिकल प्रोसीजर करने का या वो मेडिकल क्वालिफिकेशन उसकी हुई है जो इसको ट्रीट कर सकता है। यस, इस प्रोसीजर को जो पॉलिटिक्स का है आगे बढ़ना चाहिए। मैं खुद ज़ाती तौर पर और ये हमारा सिंगापुर होना चाहिए, लेकिन आपकी अलहदा कोई शनाख्त नहीं है। आपकी शनाख्त मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी शनाख्त आपके साथ जुड़ी हुई है। जो 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट था ना, उसमें जिसके तहत दो डोमिनेंट पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये इख्तियार कानूनी तौर पे दिया गया था कि या तो आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं या हिंदुस्तान के साथ। तीसरा इख्तियार था नहीं। अगर वो तीसरा इख्तियार होगा तो एक नए इंटरनेशनल ऑर्डर की तरफ हमें जाना पड़ेगा, जो फिलहाल मौजूद नहीं है। तो लिहाजा जो आपके अकाबरीन ने एक्सरसाइज की हुई है टू ज्वाइन एंड रिमेन एंड स्टे विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, लेट्स स्ट्रेंथन दैट और नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं। Thank you. My only request is to keep questions concise and articulate them briefly so that all of us will get an opportunity to ask our questions. So if I see hands up again, I'll stay on that side. There's a young lady in pink. Vasila, you can get him. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum Sir. I'm Vasila Kakar from Sheen, Balochistan. Oh, did you know her? No. I'm a fourth year medical student here. First of all, I would like to express my gratitude for your presence here. It's truly an honor to have you address us. So my question is basically on the healthcare situation of Quota.
I know this topic has been brought on multiple occasions, but I think so it never got the required attention. So as we know, there was a recent outbreak of Congo virus in Quota, and 12 or more healthcare workers of ours got infected, and unfortunately we lost few of them. And if I recall properly, there was a similar outbreak that happened in 2011. Yeah, carry on. And we lost 2 of our healthcare workers. So fast forward 12 years, and instead our healthcare to get to better or even remain stable, it has even gotten worse. So even during this recent outbreak, there was lack of necessary facilities to prevent the spread, to treat those affected individuals. We even didn't have the required timely availability of air ambulances and other facilities to shift those critical patients to a better tertiary care hospital in Karachi. And if it was there, maybe we would have saved those lives. So my question is, what are your plans, or what is the government planning to do about it? Or is this topic will be kept aside as it has been the case in the past? Thank you. First of all, I'm so glad to see you, hailing from Pishin, from the same tribe, and you are having quite a remarkable contribution over here, and I'm very proud of that. Keep doing the good job, and inshallah we'll have a hospital in Quetta one day under your leadership. These are the challenges of the governance which we need to understand. You know, there was a political discourse for last many years and for almost many decades, if I would say it, that all the provinces wanted more autonomy. And as a result of that, 2008, we get 18th Amendment and the financial and political power that are transferred to the provinces. With a caveat that after that, it had to be followed by a provincial finance commission. The process halted there, and we got an NFC. The 18th Amendment is there. The concurrent list from the federal government was diluted, and now all the provinces have got their more political and financial power. And health is a devolved subject. Now, when health is a devolved subject, what do? You can, well, of course, federal government to an extent can play some role, but when you have given all the money to the province, it is now their discretion that how do they spend it. I'm saying this with pain. I'm not enjoying it. I don't blot over. The kind of capacity we have at the provinces, particularly political and bureaucratic, is part of the problem. Is part of the problem. You do not see any kind of visionary leadership either in bureaucracy or in political class. So where is the planning section? I mean, you have got a hospital in the heart of the town, which is what? More than 100 years old, almost. It was constructed somewhere in 1920s or 1930s, early 1930s. For the population of 8,000 to 9,000 people. And now the documented, according to the census, it's 3 million plus population, and the conservative estimate, which is not non-documented, I think so the population is more than 5 million. And the same hospital is providing services, and with this devolution of the power, there is no vision how to magnify, how to amplify the services which is the need of the population. You're talking about the subspecialties and the rest of the ideas associated with it. We do not even have sense of basic health care. How do we do that? And one challenge is there's a scarcity of resource. The other is mismanagement of resource. We need 1,000 rupees, but we've got 100 rupees. And I mismanage those 100 rupees too. So that is the challenge. What do we do with that? It is directly related to our political system, our governance systems. As an individual, after 2 months when I would be retiring from this stint,
How much I can do, it would be mere rhetorics or shallow slogans. That is part of the problem. If somebody wants to contribute, I think so they should come and participate in a responsible political process. Until and unless you do not have visionary and good individuals in politics, forget it. Then we will outsource it to these clubs, be it the club of popularity or dispopularity, whatever the case is. But the actual issue of governance would never be attended in this country. This is my honest opinion on that. Thank you. I turn to the center. There's a young man sitting behind. Please go ahead. If you can get a mic. Thank you so much, Honorable Prime Minister Saab, ko visit AKU. My name is Vijay Kumar. I am from district Sangar. I am second year nursing student. Sir, my question is that as there is 5% quota for minority in the government job, but sir, as you know, the minority are mostly belonging from the underprivileged area and they belong from the low socioeconomic. So sir, they hardly have access about the higher education. So sir, what you can do to maximum opportunity for them to compete to get higher education? Because sir, mostly जो हमारे district सांगड़ या सर interim जो सर students होते हैं, तो सर वो मैट्रिक या इंटरमीडिएट करके स्कूल को लेफ्ट आउट कर देते हैं, क्योंकि सर यूनिवर्सिटीज की फीस ज़्यादा होती है, तो सर उसमें माइनॉरिटी स्टूडेंट्स कम ही पार्टिसिपेट करवाते हैं. तो सर इसके लिए कोई इकदाम आप? थैंक यू विजय. एक तो मैंने 2008 में पहली मरतबा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था. तो आपको पता है कि इलेक्शन के दौरानिए में आपको हर किस्म की कम्युनिटी से वोट की अट्रैक्शन की कोशिश आप करते हैं. तो क्वेटा का अगर कोई है, उनको पता है कि ईसा नगरी वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हमारी बड़ी तादाद में रहती है. जब मैं वहाँ जाता था और उनको रिक्वेस्ट करता था टू कैनवसिंग फॉर द वोटिंग, तो वो कहते थे कि हमारे जो सैनिटेशन की जॉब्स है उसमें मुस्लिम्स आ रहे हैं और ये डिस्क्रिमिनेशन है हमारे अगेंस्ट. तो मुझे आग लग जाती थी और मैं उनको खूब सुलवाते सुनाता था कि यार मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बने, कंप्यूटर साइंटिस्ट बने, तुम सैनिटेशन में फंसे हुए. एक तो कम्युनिटी में जो इन्फ्यूज करना है सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, वो सबसे बड़ी बात. यू आर नॉट अ माइनॉरिटी, यू आर जस्ट someone with diversified background, with a different background. You are equal Pakistani. तुम उतने ही हो जितना मैं हूं. मेरा नाम माँ बाप ने अनवार रखा, तुम्हारा विजय रख दी. तुम सांगड़ में पैदा हुए हो, मैं कान में तरज़ई किला सिफुला से मेरा ताल्लुक. हमारे अजला मुख्तलिफ. तुम सिंधी बोलते हो, मैं पश्तो बोलता हूँ. हमारे पास विजय कुमार है, वो पश्तो बोलता है. आपके पास कोई अनवार होगा, वो सिंधी बोलता होगा. एक तो जो हमें सोशल लेवल पे जो काम करना है वो ये है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ रियासतों के नाम के हवाले से भी सियासत में उनका इस्तेमाल होता है. जो असल में मदीना की रियासत के उसूल थे वो यही है जो मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ. उसमें इक्वालिटी थी, बराबरी थी, जिम्मेदारी के हवाले से, हुकूक के हवाले से. बहुत मशहूर एक वाकया है कि एक हिपोक्रेसी के तहत, मुनाफिकत के तहत एक मुसलमान का उस वक्त का उसका मसला एक ईमानदार यहूदी के साथ पड़ गया. तो उसने कहा कि जी हमारा ये जो डिस्प्यूट है इसकी रेजोल्यूशन कैसे करें. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म दुनिया में सबसे मुश्किल काम. उसने कहा यार मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे जो पैगंबर हैं उनकी तरफ जा रहा हूँ, उनसे कराऊंगा. यहूदी ने कहा. वो जो मेरी तरह का था उसने कहा नहीं यार ये तो मैं फंस जाऊंगा. उसने कहा नहीं जी, वो जो तुम लोगों के लीडर है उससे कराते हैं. उसने कहा नहीं मैं उससे नहीं करा रहा. दे इवेंचुअली वेंट देयर और वो उस यहूदी के हक में हो गई फैसला, क्योंकि वो मेरिट था. जब तक हम मेरिटोक्रेसी को इंकरेज नहीं करेंगे, इन्फोर्स नहीं करेंगे,
sometimes even positive discrimination خرابی پیدا کرتی. ہمیں مائنورٹیز میں ان کے کوٹے کو بڑھانے کے لیے سماج میں مواقع پیدا کرنے ہوں گے, سوسائٹی میں مواقع پیدا کرنے ہوں گے. ہمیں کھل کے یہ باتیں کرنی ہوں گی جو میں شاید آج اس بند کمرے میں کر رہا ہوں, ہمیں ہر جگہ پہ کرنی ہوں گی. اور وجے کو ویسے میں بائی دا وے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نرسنگ کے پروفیشن کے ساتھ میری بڑی جذباتی وابستگی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اٹ از ون آف دا موسٹ نوبل پروفیشن. کاش ہم نرسنگ کو وہ احترام اور وہ سٹیٹس دے سکتے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. پوری دنیا میں یہ جو آپ ڈاکٹر ہیں وہ یہ تو صرف پیشنٹ کو 2, 4, 8, 10 منٹ کے لیے دیکھتے ہیں, اس کے بعد یہ وارڈ سے نکل جاتے ہیں. میں اتنا بھی نہیں کرتی. And they are handed over to the nurses. They are the one who take care of patients, and they are the one who are responsible for the so-called nursing care. Or it is one of the most well paid, well respected, well received. جو بڑے بڑے ڈاکٹر میرے دوست امریکہ میں یو کے میں ہیں وہ خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ کسی نرس سے شادی ہو جائے, اس کا سوشل سٹیٹس بڑھ جاتا ہے. اور ایک ہمارے ہاں پتہ نہیں ہم نے اس پروفیشن کے ساتھ کیا ظلم کیا. تو تم مائنورٹی سے زیادہ اپنے اس پروفیشن کے لیے ایڈوکیسی کرو. یور آئیڈینٹی ایز اے نرس از مور امپورٹنٹ دین یور آئیڈینٹی ایز وجے. اور سوسائٹی کو, اسٹیٹ کو اس میں کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. جو بھی کمیونٹیز ڈس ایڈوانٹیج ہیں اس میں انٹرونشنز ہونی چاہیے تاکہ وہ انکلوسیونیس آ جائے, وہ انکریج ہوں. اس میں آپ کی کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کو کارپوریٹ رسپانسبلٹی کا کردار ادا کرنا چاہیے. جتنے سیٹ اربوں خربوں روپے کما رہے ہیں نا, ان کے ساتھ ہم انگیج کریں گے. جو کھجوریں اور چھوارے بیچتے ہیں ہندوستان اور مختلف ممالک میں, وہ اپنے ایک حصے کا شیئر جو ہے نا وہ اس کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے. دوسرے کمیونٹی میں پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا چاہیے. تو ایسے انداز میں سوچنا چاہیے جو آؤٹ آف دا باکس ہو. لیکن آئی ایم فلی فار اٹ. ایز اے نرس اینڈ ایز اے وجے یو شوڈ گرو ٹو دا ایکسلنس آف یور لائف. I'm a researcher, so we shouldn't discredit all the physicians who do honorable work. Sitting right behind the president, there is a young lady. بیٹھو آرام سے, کوئی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, آرام سے اپنی جگہ پہ بات کرو. Assalamu alaikum, sir. My name is Rana Mubashir, and I'm a year 1 MSPH student here at AKU, and I belong from Punjab. That's a Masters of Public Health. Public health, okay. Yes. So, sir, as we navigate through this economical crisis, and as somebody who's looking forward to staying here in Pakistan and working here, I want to ask, what is the government's vision to promote public health research in Pakistan? And are there any policies or initiatives in place to promote research within this realm? Well, if I give you a specific answer to the public health research, probably it would be based on rhetoric without having real information, because this is not one of the area which is under my prime responsibility. I've delegated this to a ministerial position of Minister of Health and then so on and so forth. But if you ask me that is there any requirement for it, of course it is. It's one of the most important areas. چاہے وہ پریونشن کی صورت میں ہو, ادر دین دیٹ ہو. بٹ اسپیسیفکلی if I would be able in a position to give you or enlighten you about a policy, right now I can't do it, but I'm more than happy to share with your moderator or administration, and we can give you the latest status, what is going on, and if there is any feedback and input on that, we would also welcome that. Okay? Thank you. I would really like someone from one of our educationists to perhaps ask a question. There's a gentleman there. If you thank you. My name is Suhail. I'm PhD student. Please open. I'm PhD student at KUID, Khan University Institute for Educational Development, and I am from Mardan, Khyber Pakhtunkhwa. Oh, good. So
So we got GB, we got Balochistan, KP, Punjab. Wow. And the What a gender random- representation. What a random picks. So, first of all, sir, thank you very much for giving us this opportunity. In fact, it's very few people have such type of opportunity to directly interact with the policymakers, even in fact the leader of the state. So thank you very much. Sir, I have two questions, and I would request you to please, if possible, give response to both of the two questions. And so I'm not from the political background, I'm from the education, so the question are only related Even if you are to from the political, education. I don't mind. Okay. So the first question is related to education crisis in the country of Pakistan, and how it is a future national security threat for the country. Sir, recently there were an international examination of trends in international maths and science study, where international global countries have participated, and Pakistan got second position, but from the bottom. So which means that a very rare few students or currently enrolled students in schools have like the ability to understand maths and science. There is another study conducted by the Khan University Institute for Educational Development, which also shows that overwhelming majority of Pakistani students have weak understanding in maths and science. And how the teachers are teaching, it's also an outdated way. Now, if this country has to develop, अगर फ्यूचर में हमें इस मैथ्स और साइंस टेक्नोलॉजी में ही डेवलप करना है, और जिस हमने देख लिया कि दुनिया के उन लोगों ने तरक्की की जिन्होंने मैथ्स साइंस को अच्छा किया, टेक्नोलॉजी में उन्होंने किया, तो हाउ कैन with this current crisis and maths and science in the country, don't you think it's a national security threat? And is there any way कि आपकी जो national security councils वगैरह की national security issues discuss होती है, have you ever discussed those such type of issue, and what you have planned? So if you allow me, I can ask, just pose the short question. That is the short question. That is related to the quality of higher education, and especially in the time when there is a more emphasis on the expansion of universities in Pakistan. And on the other hand, there is a financial crisis in the universities. You must be aware, in the Peshawar University and the Balochistan University and many other universities, they don't have sufficient budget to give for the salary. So what the government is going, and recently in previous government we have seen that there was an amendment to establish new university. As a caretaker prime minister, how do you see, and what would be your response? Thank you so much. I think so, very pertinent questions, both of them. The first time I've heard you stumped. I'm bold. The issue is that it's not that I don't have anything to say. But let me start with another Persian verse. You know, there was a famous Persian poet by the name of Mirza Abdul Qadir Bedil. And Bedil, according to the Iqbal, in the age of youth, God saved him from atheism, but it was Bedil. Bedil is a symbol of quite deep and profound poetry with beautiful metaphors. He says, Sukhanha dashtam az dastgai ilm fan bedil. Sukhanha is a plural. That I have so much to say from the realm of knowledge and skill. He has differentiated between the two. Sukhanha dashtam az dastgai ilm fan bedil. Bakhamoshi yakinam shud. I started believing in silence. Ke pur behuda me guftum, because I started talking nonsense. So with this pretext, I'm going to respond to both of your queries. Unfortunately, in this country, our priorities have not been in the right place. When there is a crisis in higher education system, where you cannot allocate funds to carry on and impart the knowledge which is required for the building of
this edifice of your nation, you allocate in the name of development billions and billions of funds to the member of the National Assembly and provincial assemblies, which, in my opinion, is quite criminal. What do? You have chosen a system which ensures the political positioning because of this constitutional arrangement. I am more interested about my trend on Twitter rather than understanding that what is the importance of science and mathematics for the, again, the real edifice of this nation, to which I claim that I am very much committed. So what do? Even if I portray myself that, oh, I am the distinguished and the different one, would it make a difference? No. I'm just an individual. An individual who's been assigned for a limited time span a task which I will do in whatever capacity I can, something good, something not that good, but I'll just retire to the dustbin of the history. But these questions which you are raising, they'll remain. And we do not have any strategic clearance and direction on that. And that is part of the tragedy. Yes, there is a realization when you interact with the people who are responsible for the national security of this country. We do discuss these things on different forums, but those discussions are not translated because of the kind of the political arrangement you have in this country. The discussions are about the constituency-based. What is the whole political discourse at this moment? We are just having elections around the corner. Have you seen any mainstream talk show on this topic, that what is the level of understanding of mathematics and science in this country? From all your private media outlets. There is an era of vlogs these days. Have you heard any of the vlog on this topic? So you are a lone individual raising a question, and I'm a lone individual responding to that. वो क्या था कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, वो वाली कैफियत है. Generally, मुझे स्पेशलाइज्ड या इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स में ये रियलाइजेशन होगी है, लेकिन it is not being translated as a policy, as an implementing arm of the government. And that is the challenge. मुझे जितनी भी समझ हो, एहसास हो, अगर वो ट्रांसलेट ना हो उस इम्प्लीमेंटेशन में पॉलिसीज़ का, क्या फ़ायदा उसका? मैं बहुत खूबसूरत गुफ्तगू यहाँ करके निकल जाऊँगा, आपसे अप्रिसिएशन ले लूँगा, लेकिन मेरे जो 7 साल का बच्चा है उसको 2 + 2 = 4 की समझ नहीं आएगी. वो जो टूल्स उसको चाहिए या बच्ची को, वो मिलने चाहिए. इसके लिए एडवोकेसी की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, आप जैसे लोगों को बोलने की ज़रूरत है, जो आपने अभी की है. यू हैव कंट्रीब्यूटेड. दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन, ऑनेस्ट टू गॉड. आप अपने अलाइंसेस बनाएं, अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर अलाइंसेस बनाएं, अपने इंस्टीट्यूशन से बाहर alliances bane, because these are the sort of things which get attention out of a mission, out of a passion. जब तक आपको passion इसके पीछे नहीं होगा, nobody would listen. Jolt people, do something nasty, do something different, seek attention, ताकि लोग मुतवज्जे हों इस बात. ये वो छोटे छोटे tools हैं जिसमें आप लोगों को you can knock and the sleeping souls like us may get awakened. But this is the state of affairs which I'm honestly sharing with you as much as I can. Your Excellency, this is a rich discussion and you can see the hands going up. So with your permission, we'll continue to take. I apologize. I actually can't see the people in the back. So, I mean, if I could just get you to get the mic to the gentleman who's standing right next to you or sitting. Ji, go ahead.
Assalamu alaikum. My name is Amir Ibani. I'm a final year medical student. I was born in Japan, and I was then brought up in Karachi since about 2010. You were born in Japan? Yes. My mom is Japanese. MashaAllah. Yes. Ah. So my question, I'm a final year medical student. I am soon to graduate, inshallah, next year. And my question is about the lack of employment opportunities in Pakistan, the brain drain, the issue of brain drain in Pakistan, where I would love to work in Pakistan. I consider Pakistan my home. I've been here for all these years. But the issue is you see this mass exodus of students just fleeing the country, seeking better opportunities in countries like the Middle East, in countries like the US and the UK. What do you think the government, what do you think you can do perhaps during your tenure in office about this issue? Thank you. Thank you. And first of all, don't consider it home. It is home. It's not just a consideration. And you are one of us, you know. And I'm so happy to see you and someone like you who owns Pakistan in the way you are doing it. Please sit. I've been misquoted on the social media on this one also. So at this time, I would be very careful what I have to say. I don't see this issue as in isolation. I try to be quite pragmatic about it, that why there's a mass migration from point A to point B. And migration has been throughout in human history a reality. The sedentary populations, they have moved from one place to another in search of different and challenging opportunities, driving the ambition to conquer. And then in this modern age, the economic immigration is the primary drive which take people from one place to another. Until and unless you do not have a developed, settled structure back home, there would be people who would be moving from point one to another. Why do these people go either to GCC or to UK or to US? If I have a 7 or 8 years old kid, I want him or her to have access to good education, good infrastructure, relatively secure environment. So these are the 3, 4, 5 factors which are driving people to choose their position of permanent stay. And if any of those indicators are not promising that much, whatever they call home, then you cannot halt this process. But this process is not eternal. It's not perpetual. It has its shelf life. In India, I've been trying to give explanation on this account that in early 60s, people immigrated towards the Western Hemisphere. They settled in the US, they settled in UK, other European countries. And they spent some 30, 40 good years over there, developed their expertise, gained certain capital. And in the early 90s, when the Indian economy started liberalizing itself, it attracted all of that, and that brain drain became, after 4 decades, its brain assets. Along with their capital and their expertise, they went back, they invested in their home country. Medical tourism is one of the finest going over there, thanks to the doctors who were settled in the US in the American medical system for 4 decades. Otherwise, they wouldn't have been in a position to offer those services even in the private sector. So if this situation is right now happening with the Pakistan, we need to, one, should not take it with a negative connotation. If a nurse or a doctor or an IT expert is going out into the global supply chain of services, this is what exactly I want. I would be earning through those individuals, and it would be contributing into my GDP and overall economic health. So this is not a curse. I don't know why people is projecting as a curse. There is a nuance to that
and a sense of despondency is being created that, oh, look at this. The whole young generation is so despondent. They are abandoning their home country and home towns, and they would turn into ghost towns and they will all leave it. This is not going to happen. This process would be quite natural. What we need is to do the due diligence, and wherever the gaps are being created, try to fill those gaps. We are a country of 240 or 250 million people. It's a huge population. If, let's say, 100,000, 200,000 or 400,000 useful individual goes and settles somewhere else, they have not entirely divorced from your society. They are still connected to your society. From where do we get our remittances of around 18 to 19 billion dollars a year? From the same kind of people who left a decade ago or 2 decades ago or 3 decades ago, and they are from the town of Mirpur to other towns who are settled in UK or US or GCC countries. They are actually our assets. So these are the new assets which we are developing, or in an organic manner they are being developed. So I do not see it with a negative connotation, but at the same time, we need to develop our own infrastructure, make the indicators better, and one area is to export services to earn money, not the whole of it. The rest of the GDP has to be focused on, and the domestic produce has to be made better. I think we'll take one last question from this side. I feel like we've ignored this side. So the lady in front, thank you. Assalamu alaikum. Thank you, Honorable Prime Minister. Jazakallah for giving us the opportunity. We are really grateful to have you. I'm Amna Sohail, and I'm from Karachi. I'm a final year dental hygiene student at AKU. To give you a brief intro of what dental hygiene is, it was initiated in 2015 with the intent of preventative care, emphasizing the role and importance of oral health. So my question to you would be regarding the absence of licensing body in Pakistan for this profession. What steps can be taken to ensure that there is a standardization of framework in Pakistan? Secondly, regarding the use of smokeless tobacco, pan, gutka, chalia, tambaku, naswar, ये सब कराची में बहुत ज़्यादा prevalent है. Thank God she didn't ask for cigars. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? What can the government do to regulate? And yeah, thank you so much. First of all, let me share that I have appointed a SAPM on medical education and patient care. He's a professional. I'm sure many of you would be knowing Dr. Amir Bilal. He's a cardiothoracic surgeon. And one of the area was that licensing, imparting medical education, not just in the dental arena, but otherwise the entire medical profession, undergrad, postgrad, and the rest. And the kind of a mushroom growth these private businesses and the kind of a harm they have done to the produce which we are having clearly shows our commitment that we give a priority to this area. Again, with your specific query, I don't have something at the back of my mind, but if you are interested, we can link you to our SAPM's office, and your inputs would be very much encouraged, and we would welcome that, and even anyone else also. And he probably would be on a visit here in Karachi also, and I can arrange a meeting. Thank you. With Khan University and other professionals also. So you can have a discussion on all the details and give your valuable inputs also there. Yeah? Okay.
I think we do have to end, and I want to just appreciate the Honorable Prime Minister for your candor and really just the insight that you've been able to provide to us. This conversation could go on for hours, and I'm happy to do so, but and I'll apologize to all the students for the questions that we couldn't take, but I think the Prime Minister has been very open to receiving those kinds of comments and feedback and questions. And with his permission, I'll be happy to send them over to your office if you would like to continue to answer some of these difficult questions. Please. I mean, I have a number which is available on the Google, so you can directly WhatsApp to me also. Not an issue. So we'll end here by thanking the Prime Minister for taking the time out to be with us. I want to thank everybody in the audience, but particularly the students who have asked these these questions that are going to impact not just their own lives, but the lives of everybody in the country. So thank you everybody for being here, and we'll continue this. मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे?